Hello friends, welcome to the third part of multi-threading program. In the first session, we have discussed what is thread, what is process, then thread lifecycle, and there are total two methods for creating a thread. And finally, we have discussed that how to use isAlive method and join method in multi-threading program. Then in the second part of multi-threading chapter, we have seen why synchronization is required and how to achieve synchronization in multi-threading program. And we have seen total two ways. You can synchronize your thread via synchronize keyword, or there is one another option that you can also use synchronize block. In which situation you have to use block and in which situation you can use keyword, that we already discussed into the second part of multi-threading program. Now we'll continue from that point, and in this session we'll learn something more interesting concept in multi-threading. Now just look over here in this figure. I have discussed regarding the famous producer consumer problem. Do you have any idea regarding this problem? Actually, this is a very famous problem, and mostly in operating system. Well, we were in 4th semester and we have used book Tannenbaum, and that book this problem will be described very nicely. So in this problem actually हमको क्या करना है? First, there is a producer and consumer. What is the task of producer? Producer is generally used to produce something, and what consumer will do? After producing the item, this consumer will consume the item. So today we'll see this problem practically. Yes, I will show you the live demonstration for this program in NetBeans. So हम लोग क्या करने वाले हैं आज? We'll make two thread. The first thread for the producer, second thread for the consumer. And assume in our critical region we'll have two methods. The first method is put, that is for the producer for producing the item, and the second method is get, that is for the consumer, that is used by the consumer thread for consume the item. So in this program we will make two threads. First is a producer thread and second is a consumer thread, and these two threads are trying to share this common resource. Okay, and let's see what happened. So open the NetBeans. Okay, lecture 14, right click, new, sorry it's not package, new Java class, and I'll give the name sync demo, finish. Now first I will make one class like class Q which contain two methods, and the first method is public void get, and this s out got and रिटर्न एन. सर जी एन कहाँ से आया? सो चलो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर एन, इंटीजर एन, एंड यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, सो आई कैन नॉट राइट वर्ड, हियर आई एम गोइंग टू राइट इंटीजर. ओके, एंड the second method that we are going to use in our program is which method? Public void put integer and system.out.println put plus n. बराबर. So we already declared two method put and get. This method will be used by the producer thread and this method will be used by the consumer thread. So now we are ready to make two thread. हम जो पहला थ्रेड बनाने वाले हैं वो कौन सा बनाने वाले हैं? प्रोड्यूसर. फॉर अगर थ्रेड बना रहे तो इम्प्लीमेंट्स क्या करेंगे? रनेबल. अगर रनेबल है
So we need to write down the logic for the run method. Yes, वो बाद में लिखेंगे हम लोग. पहले चलो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो अभी ऊपर क्लास बनाया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. Then same method in a multi-threading thread T1. Then we'll take one constructor in which we'll pass and this dot q1 equal to q1, then t1 equal to new thread this and t1 dot start. Okay, so जैसे ही start method execute होगी, JVM will immediately call the run method. So here we need to write down the logic. Logic हमने already लिख लिया है. हम अभी कौन से thread के अंदर है, producer. So producer will generally use which method, put. Put कौन से class के अंदर है, Q. So here we are going to write down the object of Q1 and which method I need to use, put. बराबर. ओके, कितनी आइटम हमको प्रोड्यूस करनी है वो तो पता नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं. Here I will take integer I equal to 0 and while true, here I am going to write I plus plus. So here I am going to produce the item. Here I am going to produce the multiple items. बराबर, starting from I equal to 0 or 1. Okay. Now second thread, class consumer implements runnable. रनेबल है तो now again q1 thread t1, then consumer constructor q1, and inside this constructor now I'm going to write this dot q1 equal to q1, then t1 equal to sim coding, t1 equal to thread. Here I have to keep this T capital, and finally t1 dot start. Okay, now जैसे start वैसे आपको से run method, and inside the run method I'm going to write q1 dot get. कितनी बार हमको ये रन करवानी है, multiple times. So I'll simply write while true. Okay, now this is our main class. In this class I'm going to create the object q2 equal to new q, then producer p1 equal to new producer and q2 object, yes, good, and consumer c1 equal to new consumer object q2. Okay, okay, so this is our program. We have made one class q which contain two method get and put. This method will be used by the consumer and this method will be used by the producer class. So logic. So ultimately in this program we are going to produce the multiple items as well as we are going to consume the multiple items. Okay, we will try to execute this program. First right click,
compile, let's check what we'll get as output. Okay, build successful. Now right click and run, and yes, close, yes. Okay, now see the output. Put 0, put 1, put 2, then got 0, put 3, got 0, put 4. Why this thing is happen? Why? Because we have now tried the synchronize keyword. तो चलो ऐसा लिख देते हैं, synchronize. दोनों मेथड को मैं क्या कर देता हूँ, synchronize. Okay. Now again try to execute this program while run. Yes. Okay, so put, then got 0. I think there is some problem in consumer thread. What is the problem? Q1 dot get, and it will return, and just a second, here I need to write this dot n equal to n. Just a second, again we'll check this program. Okay, it's now it's worked perfectly. Okay, now see the output. Put 0, put 1, put 2, put 3, put 4, put 9, put 10. देखो put. Okay, then here I will get the got 94, got 94, got 94. So what was the problem? Even though I have used the synchronize keyword, my program will not work. My program will not run perfectly. Why? What's the problem? In the last lecture, when we have seen the synchronize keyword and block use, at that time all the threads will be remain into the discipline. But in this problem, producer consumer problem, even though I have written the synchronize keyword, it does not work for me. So what is the problem? Ultimately, which type of output I want? Producer produce the item, then consumer consume that item, then producer producing the another item, then again consumer consume the item. So turn by turn, first producer, then consumer, then producer, then consumer, then producer, then consumer. I want this type of sequence in this program. And for keeping this type of sequence, synchronize keyword is not sufficient. That we already seen in the output. Total how many items are produced? Starting from 0 to 94. And how many items are consumed? Only single, 94 item. What about 0 to 93 items? So it's a mistake. Alone synchronize keyword is not possible to produce a sequential and desired output for this producer consumer problem. So अब हम क्या करने वाले हैं? So for that, ultimately we want to achieve some type of concurrency in this program. Yes, parallelism. Producer, then consumer, producer, consumer, producer, consumer. And how to achieve this type of concurrency in Java? For that, Java provides two most important method, that is wait and notify. And remember one thing, these two methods are not from the thread class. Both the methods are from the object class, and object is the inbuilt base class in Java. Again I am repeating the sentence,
wait and notify all. These three methods are not the part of thread class. These all are the part of the object class in Java. So how to use wait and notify? How my output will change, that we will see in this lecture. So first I have shown you the problem that even though I have written this synchronized keyword, I will not get the perfect output. So how to make this output perfect, that we will discuss in this lecture. Clear? Okay. So open. So actually this is our problem. Thread 1 producer, thread 2 consumer. This producer will use the put method and consumer will use the get method. We already developed this type of program. Now the next thing, this is the modified version and working version of producer consumer problem. चलो हमारे पास ये है producer thread, yes, consumer, yes, put method, yes, got method, yes, but यहाँ पे मैंने कुछ नया किया हुआ है. क्या किया हुआ है? Here I have used wait method and notify method in both the method put as well as in get. चलो logically प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों में से कौन सा थ्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए? लॉजिकली ऑब्वियसली प्रोड्यूसर. देन एंड देन कंज्यूमर कैन कंज्यूम द प्रोड्यूस आइटम. सो व्हाट इज आवर गोल? वी फर्स्ट नीड टू टेकन केयर ऑफ दैट आउट ऑफ दिस टू मेथड, आउट ऑफ दिस टू थ्रेड, ऑलवेज प्रोड्यूसर विल स्टार्ट द फर्स्ट. सो हमको ऐसी कोई सिचुएशन रेडी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से कंज्यूमर थ्रेड सबसे पहले स्टार्ट ना हो जाए. सबसे पहले कंपल्सरी कौन सा होना चाहिए? थ्रेड प्रोड्यूसर. एंड टू अराइज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन here we are going to use wait and notify method. So how to use wait and notify? So ultimately हमारा सबसे पहला गोल क्या है कि हमको पहले कौन सी मेथड कॉल करवानी है? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन सी मेथड कॉल यूज करता है इस दोनों में से? पुट. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट टेकन वन वेरिएबल which data type is boolean, some variable that is flag in this case equal to false. और दोनों में से मुझे सबसे पहले ये मेथड कॉल करवानी है प्रोड्यूसर वाली, तो उसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया while flag. सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. मुझे अभी पहले ये नहीं कॉल करवानी, तो मैंने उसके अंदर क्या लिखा? while नॉट इक्वल टू फ्लैग. तो इन दोनों में से मान लो कि दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आ गए, फिर भी सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा होगा? ये थ्रेड. क्यों? इसके अंदर सबसे कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है सबसे पहले. गॉट इट? ओके. सो यहाँ पे मैंने लिखा है while flag. दैट मीन्स इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू देन सबसे पहले मैंने क्या कॉल किया हुआ है उस मेथड के अंदर, while के अंदर, while loop के अंदर? wait. So what is the meaning of wait over here? Whenever I am going to write, now listen carefully, whenever I am going to write wait method inside the put, that means this method, which method? This wait method will tell the another thread, listen carefully, this wait method of put will tell the another thread, please give up the monitor यार, तुम मॉनिटर छोड़ दो, मैं तुम्हें मॉनिटर दिलवा सकती हूँ. कब? when I will notify you. Again, wait means what? This method will tell the another thread that please give up the monitor. I will give you all the resources. I will give you all the resources once I finish my task and when I notify you. Clear? So with the help of wait, remaining all the threads are go into the wait state. And वो तब तक एग्जीक्यूट मोड में नहीं आते, वो तब तक रनिंग मोड में नहीं आते जब तक वो मेथड कौन सी मेथड कॉल नहीं करती? notify. So ultimately notify method is used to give a wake up call to
to all the threads. आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल लैंग्वेज. अभी मैंने वेट मेथड कौन सी किसके अंदर लिखी है? पुट के अंदर. सो ड्यू टू दिस वेट अनदर थ्रेड, दैट मीन्स दिस थ्रेड विल गो इनटू द वेट स्टेट. और वो कब तक वेट में रहेगा? जब तक यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा? नोटिफाई. क्लियर? ओके. जैसे ही इसका काम खत्म होता है, हमने लास्ट लाइन कौन सी लिखी है? नोटिफाई. सो दिस मीन्स इसके ये थ्रेड की वजह से जो भी थ्रेड वेट में गया था, दैट मीन्स गेट, वो सारे थ्रेड को एक वेकअप कॉल जाएगा. सो हमारे अंदर कौन से थ्रेड को वेकअप कॉल जाएगा? गेट के. सो जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होगी, इट विल अगेन कॉल द वेट. सो ड्यू टू दिस वेट, नाउ दिस थ्रेड विल गो इनटू द वेट स्टेट. सो फर्स्ट प्रोड्यूसर, then consumer, again producer, then consumer. So this is how you can use wait and notify method. मुझे सिंपल एक ही लैंग्वेज में बोलना है. So what is the use of wait method? Wait method will tell the another thread to give up the monitor. Whenever that thread will finish its execution, it will simply give the wake up call. Then any another thread into the critical region. So this is all about wait and notify. Now how to apply this logic in our program? चलो देखते. Open the NetBeans. चलो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने मैंने. I just simply need to write wait and notify. So how to write wait and notify? So first पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले मेरे बुलियन एक वेरिएबल ले लेते हैं. बुलियन फ्लैग इक्वल टू, इनिशियली आई विल कीप द वैल्यू फॉर द वेरिएबल इज फॉल्स. एंड सबसे पहले मुझे कौन सा थ्रेड स्टार्ट करवाना है? प्रोड्यूसर. सो वाइल फ्लैग इमीडिएटली आई विल कॉल द वेट मेथड. जैसे मैं यहाँ पे वेट लिखूंगा, so due to this wait method, automatically this thread will go into the wait state. उसके पास जो भी रिसोर्सेज हो गए, उसके पास जो भी मॉनिटर होगा, वो उसको गिव अप कर देगा. क्लियर? चलो यहाँ पे मुझे एरर क्यों दिखा रही है? बिकॉज इन द केस ऑफ वेट ऑल्सो आई नीड टू राइट द इंटरप्टेड एक्सेप्शन. ओके ओके. नाउ आफ्टर कॉलिंग द वेट मेथड, आई कैन इजीली कंप्लीट द टास्क ऑफ द प्रोड्यूसर. अब मुझे प्रोड्यूसर से क्या करवाना है? आइटम प्रोड्यूस करवानी है. ओके चलो आइटम प्रोड्यूस करवा ली. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क आई विल सिंपली मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ फ्लैग. बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है? फॉल्स. काम खत्म हो जाने के बाद मैं उसकी वैल्यू कौन सी कर देता हूँ? ट्रू. और बाद में लास्ट में आई विल गिव द वेकअप कॉल टू द कंज्यूमर थ्रेड. अब फ्लैग की वैल्यू कौन सी हो गई है? ट्रू. देखो गेट मेथड के अंदर अब हम क्या लिखने वाले हैं? वाइल नॉट इक्वल टू फ्लैग. दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन कब ट्रू होगी? कंडीशन सक्सेसफुल कब होगी? जब यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू. अब तो आएगा ना यहाँ पे ट्रू. क्यों? हमने यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू कौन सी कर दी है? ट्रू. सो द फ्लैग इक्वल टू ट्रू, कौन सा थ्रेड स्टार्ट होगा? गेट. और उसके अंदर जैसे ही गेट थ्रेड कॉल होता है, इमीडिएटली आई विल राइट द वेट मेथड. सो अगेन ड्यू टू दिस वेट, नाउ producer thread will go into the wait state. Now it is time for consumer to consume the item. तो चलो वो कंज्यूम करता है. system.out.println got, उसको कंज्यूम कर ली, उसका काम खत्म हो गया. यस. तो जैसे ही उसका काम खत्म होता है, अगेन आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ फ्लैग एंड आई विल कीप द वैल्यू, आई विल राइट डाउन द वैल्यू, सॉरी, false, and simply give the wake up call. Simply give the wake up call. So due to this notify method, अब कौन सा थ्रेड रन होगा?
प्रोड्यूसर. चलो प्रोड्यूसर के अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, वेट. सो ड्यू टू दिस वेट दिस विल गो इनटू द वेट स्टेट. प्रोड्यूसर अपना काम कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, बाद में फ्लैग की वैल्यू चेंज. नाउ दिस थ्रेड, देन दिस थ्रेड, then this thread. So this is the sequential output that we will get. चलो देखते हैं ये हम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बराबर. चलो, is there any mistake? Q dot put, yes. Now अभी कोई मिस्टेक है? अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अभी भी कोई गड़बड़ है शायद. यस, Q1 डॉट गेट. इसको हम सराउंड विथ ट्राई एंड कैच ब्लॉक. चलो, राइट क्लिक, रन. आई विल गेट द आउटपुट. इसको स्टॉप कर देता हूँ, देखते हैं. चलो सिक्वेंशियल आउटपुट आया कि नहीं. Yes, put 0 got 0, put 1 got 1, put 2 got 2, put 3 got 3, put 5 got 6. So this is how wait and notify method plays an important role in multi-threading program. And using these two method you can achieve the concurrency in Java. Clear? Yes or no? Good. I know it's little bit complex, but when you practicing for this program it will be easy for you. आपको सिर्फ वेट और नोटिफाई की जो रमत है वही आपको सिर्फ देखनी है, वो कैसे खेलते हो एक दूसरे के साथ. जब भी कोई एक थ्रेड में वेट लिखते हो तो उसकी वजह से दूसरा थ्रेड वेट में जाता है. जैसे वो थ्रेड का काम खत्म होता है, नाउ जो थ्रेड जो वेट में था वो एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाता है. गॉट इट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेट एंड notify and how to achieve concurrency in Java. Now come to the lectures. Now the next thing, yes, why wait, notify, notify all methods are in object class instead of thread class? Because these two methods are associated with the locks. What do you mean by lock? देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रोड्यूसर अप्लाई द लॉक ऑन पुट मेथड बिकॉज वी हैव रिटन द सिंक्रोनाइज कीवर्ड. सेम वे कंज्यूमर विल अप्लाई द लॉक्स ऑन गेट मेथड. और कैसे लॉक अप्लाई करना है? व्हेन वी आर गोइंग टू राइट सिंक्रोनाइज कीवर्ड विद एनी मेथड सिग्नेचर, दैट मीन्स अल्टीमेटली आर अप्लाइंग द लॉक. Clear? So lock equal to synchronize. And wait and notify, these two methods are associated with the locks, not with the thread class. That's why these two methods are not the part of the thread class. And one more method, that is notify all. What is the difference between notify and notify all? Notify method will give the wake up call to only single thread, but instead of notify, if I am going to write notify all, it will give the wake up call to the all the remaining threads, all the threads which are in wait state, that all threads will get the wake up call whenever I am going to write notify all method. यहाँ पे तो हमें notify all की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही थ्रेड है. एक वेट में जाता है तो एक अपना काम करता है, जैसे उसका काम खत्म हो दूसरा वेट में जाता है और एक दूसरे को वेकअप कॉल भेजते हैं. सो इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ दो ही थ्रेड थे, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ओनली वेट एंड नोटिफाई. बट अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है एंड यू अचीव दिस टाइप ऑफ कॉन्करेंसी, एट दैट टाइम यू कैन यूज नोटिफाई ऑल मेथड. ओके, नाउ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, तो सर स्लीप और वेट दोनों में डिफरेंस क्या है? विद द हेल्प ऑफ स्लीप मेथड ऑल्सो वी कैन पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड. वही चीज तो वेट में होती है? नहीं, दोनों चीज में फर्क है. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड स्लीप मेथड?
The first and very obvious reason is sleep method is from which class? Thread. And wait method is from which class? Object class. और सबसे important जो difference है, whenever you are going to write sleep, immediately your thread will go into the pause mode. This thing is not happen in the case of wait method. Clear? And one more thing, whenever you are going to use wait method, generally you can use wait with the synchronized method. Ultimately you can use wait method with the locks object, but in the case of sleep you can use with any threads. And the last difference, when to use wait method and when to use sleep method. What is the ideal situation for using the wait and sleep method? So whenever you are having some higher priority threads than current executing thread, at that time you can put the current executing thread into the sleep mode for some period of time, while if some threads are required for external resources to complete its execution, at that time that particular thread will go into the wait state. Clear? Okay, so this is all about the difference between sleep method and wait method. सिर्फ दो डिफरेंस याद रखो. सबसे पहला डिफरेंस, स्लीप इज फ्रॉम विच क्लास? थ्रेड. और वेट कौन से क्लास में से है? ऑब्जेक्ट. और दूसरा डिफरेंस, वेट को कब यूज करना है? whenever some thread will wait for some external resources like printer or any other input output devices to complete its execution, at that time वो thread कौन से stage के अंदर जाएगा? Wait. And some higher priority threads comes into the picture, at that time वो thread कौन से condition के अंदर जाएगा? कौन से state के अंदर जाएगा? Sleep. वो दोनों stage को हम क्या बोलते हैं? Block stage. बट दोनों में different है, दोनों में फर्क है, एक wait और एक sleep. Clear? ओके. नाउ मान लो कि मेरे 3 फ्रेंड्स है, अलाइस, बॉब एंड चार्ल्स. अलाइस अनाउंसमेंट करता है, डू यू गाइस वांट टू कम विथ मी? तब उसे बॉब बोलता है, यस आई विल, बट चार्ल्स आना चाहिए तभी मैं आऊँगा. और सेम चार्ल्स बोलता है, यस आई विल ऑल्सो कम, बट बॉब आना चाहिए. तो मान लो चार्ल्स और बॉब दोनों में से एक भी फिसका, सो अलाइस के साथ कौन जाएगा? कोई नहीं. सो फॉर द अलाइस दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द डैश डैश डैश. इट्स अ वेरी फेमस नेम. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक. यस, डेडलॉक, द वेरी फेमस टॉपिक फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम. यस. व्हाट हैपन if this type of situation arise in Java practically? चलो देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हमने अभी ये देखा, we are having one thread for producer, second thread for the consumer. This thread holds and wants this method only. It's a synchronized object 1, and thread 2 holds and wants the get method, and both the objects are synchronized. So this is the normal condition, but thread 1 holds the object 1 like this, it's okay. Thread 2 holds the object 2 like this, okay. And thread 1 wants object 2 and thread 2 wants object 1. This situation is called deadlock. Why deadlock? Because this program will run forever with no end. क्यों? Because both the objects are synchronized. Synchronized means what? You already apply the lock on both the objects. अगर मान लो मुझे ये लॉक रिलीज करना है, ये थ्रेड का काम खत्म करना है, सो टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड 1 आई कंपल्सरी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट 2, बिकॉज थ्रेड 1 वांट्स ऑब्जेक्ट 2. बट ये ऑब्जेक्ट तो थ्रेड 1 को मिलेगा नहीं. क्यों? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय द थ्रेड 2. सो जब तक ये थ्रेड लॉक रिलीज नहीं करने वाला, तब तक थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट 2 मिलेगा नहीं. सेम सिचुएशन फॉर द थ्रेड 2. ये तो अपना लॉक कभी रिलीज करेगा ही नहीं. क्यों? इसका काम तो कभी खत्म भी नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दिस थ्रेड वांट्स द ऑब्जेक्ट 1
और दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्या लगवा दिया है, लॉक. So whenever this type of situation is arise in which you are having multiple threads, multiple synchronized object, and this type of cross connection, at that time your program will never execute. Your program runs forever with no output. This situation is called deadlock in Java. So now what is my question? Is it possible for us to come out from this type of deadlock situation? Is there any particular solution available in multi-threading chapter or in Java so I can come out from this deadlock situation? That is your assignment, and I have already discussed the answer for this deadlock situation. Just listen my all the 3 lectures carefully. One more thing that I need to tell. In the case of multi-threading program, yes, multi-threading is a very powerful facility provided by the Java, but it does not mean that you are going to divide your whole process into the number of threads. When you divide your single process into the number of threads, so instead of increasing the performance of your program, ultimately you are decreasing the performance of your program. Why I am saying like this? जितनी ज़रूरत हो उतनी ही प्रोसेस को उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स के अंदर ही डिवाइड करो. अगर आप नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर दोगे, सो अल्टीमेटली यू आर इंक्रीजिंग द ओवरहेड ऑफ सीपीयू, और वो प्रोग्राम आपका मेमोरी एफिशिएंट नहीं होगा. एंड टू एक्सिक्यूट दैट प्रोग्राम इट रिक्वायर्ड सम मोर टाइम. सो बी केयरफुल, और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से ही आप अपनी प्रोसेस को नंबर ऑफ थ्रेड्स के अंदर डिवाइड करो. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. द नेक्स्ट सेशन will come with GUI development in Java. Thank you for listening. Goodbye.